The PSLV C-57 in its XL version will carry Aditya L1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टेन रेजर। The sun and how it impacts the heliosphere. The sun, which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, ASPECS, and Plasma Analyzer Package for Aditya PAPA payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, Solexis, and the High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, Helios, analyze X-ray flares from the sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the Earth, between the sun and the Earth. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the sun.
All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories like as IIA, IUCAA and PRL. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV C-57 Aditya L1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stages. The bottles storing the gases for command and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. The onboard batteries have been charged. Now in a little while we'll go to the automatic launch sequence initiation, for which the preparations are underway in the launch and mission control centers. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV C-57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All TTC Director confirms readiness of all ISRO stations and network for supporting अभी आपने सुना C-57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक, TCTC, रेंज निदेशक, data lover टेलीमेट्री, टेलीकमांड निदेशक तथा यान निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है। इसके पश्चात सभी आंकड़े संतोषजनक होने पर Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirms आपने data देखा from SHAR1 इस and मिशन SHAR2. के मिशन डायरेक्टर श्री SR बीजू ने इस मिशन का Hereby authorizes to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-57 Aditya L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-. आणि त्या L1 पॉइंटमधून पुढची 5 वर्ष सूर्याचा अभ्यास करेल। आता ज्या भागात भारताचे यान जाणार आहे तो L1 पॉइंट काय असतो ते समजून घेऊया। PS2 control system rotary chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core LS-139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of
LVM-3 and another mission of LVM-3 again, carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS for control system activation in progress. आदित्य L1 जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी असेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV C-57 Aditya L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S-139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds and the ground-lit and air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively. The core S-139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and the last and the fourth stage of the rocket, together with the Aditya L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter.
Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone, and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Koru. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will undergo a series of earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। As always here at the launch pad at that final minutes into the count. Let's see that go, no go in the poll or in the chat. If you're a TOP member, we do have our ISRO emoji that you can use as well, as we can 45 seconds and counting. Let's listen into mission control for the final moments of the count as we prepare to watch a PSLV rocket launch. 11:50 मिनिटांनी म्हणजे अवघी 3 मिनिटं आता राहिलेली आहेत या मिशनसाठी। फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। L1 की कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। तर खगोल अभ्यासक लीना बोकील मॅडम आपल्या सोबत आहेत। लीनाजी, ही दुसरी मोहीम आहे इस्रोची आणि सूर्याच्या दिशेला झेपावणारं मिशन आदित्य L1 हे सगळ्यात या मिशनकडे संपूर्ण जगाचं देखील लक्ष लागलेलं आहे। लीनाजी, इस्रोचं हे सगळ्यात
महत्त्वाचं आताचं काम आहे, कार्य आहे, कारण सूर्यापर्यंत आजपर्यंत आपण कधी हा अटेम्प्ट केला नव्हता. तर आदित्य L1 ही मिशन मागच्याच वर्षी खरं तर घडली असती, पण काही बजेटचे वगैरे प्रॉब्लेम्स झाले किंवा असे काही पोस्टपोनमेंटमुळे आज आता सज्ज आहे. PSLV रॉकेट एक्सेल रॉकेटच्या माध्यमातून लॉन्च होणार आहे, प्रक्षेपण होणार आहे. सूर्याचा अभ्यास अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण सूर्यमालेचा केंद्रबिंदू आहे सूर्य. आपल्याला प्रकाश ऊर्जा मिळते आणि स्पेस वेदरच्या स्टडीसाठी बेसिकली ही मिशन आहे. आणि ह्या मिशनमधून एक तर सूट नावाचा जो एक पेलोड आहे म्हणजे लीनाजी थोडंसं थांबवते तुम्हाला इथे, कारण आता अगदी काउंटडाऊन सुरू झालेला आहे. अवघे 1 मिनिट यासाठी आता उरलेला आहे आणि थोड्याच वेळामध्ये इस्रो आता आदित्य L1 लॉन्च करते. इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है. यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा. इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark 2 का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं. यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है. All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. All subs are armed. -50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए. अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा. HPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS and ignition RMS arm. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है. तर आदित्य L1 अंतराळामध्ये आता झेपावलेला आहे. भारताची पहिलीच सौर मोहीम आहे आणि भारतापूर्वी अमेरिका, जर्मनी, युरोपनं सौर मोहीम राबवलेल्या आहेत. आज आपलं मिशन जे आहे ते सुरू झालेले आदित्य L1 हे प्रक्षेपित करण्यात आलेलं आहे. अंतराळामध्ये आदित्य L1 झेपावलेला आहे. श्रीहरिकोटामधून आदित्य L1चं लॉन्चिंग या ठिकाणी झालेलं आहे. भारताची ही पहिली सौर मोहीम आहे. पृथ्वीपासून सूर्य हा 15 लाख किलोमीटर दूर आहे आणि अंतर चंद्राच्या तुलनेमध्ये 4 पटींनी अधिक आहे. त्यामुळे आदित्य L1 ला पोहोचायला 4 महिन्यांचा कालावधी लागेल असा इस्रोचा अंदाज आहे. पृथ्वीपासून सूर्याचं अंतर हे 4 टप्प्यांमध्ये मोजलं जातं. तर पहिला जो टप्पा आहे L1 त्यापर्यंत हे आपला आदित्य L1 जे आहे ते पोहोचणार आहे. पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यामध्ये स्थित L1 बिंदूवर हा पोहोचेल आणि त्या रहस्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. भारताची पहिलीच सौर मोहीम आहे आणि या मोहिमेत सूर्याचा अभ्यास जो आहे तो केला जाणार आहे. सूर्याच्या पृष्ठभागावरील तापमान, सौर वादळ, कॉस्मिक रेंज आणि अनेक गोष्टींचा अभ्यास करणं इस्रोला शक्य होणार आहे. आदित्य L1 लॉन्च केल्यानंतर त्याच्या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्यासाठी 4 महिने लागणार आहेत, म्हणजे 125 दिवस यासाठी लागणार आहे. सूर्याच्या विविध थरांबाबत सुद्धा आपल्याला माहिती मिळू शकणार आहे. सूर्यावरील घडामोडींचा पृथ्वी तलावर कसा परिणाम होतो याची माहिती सुद्धा मिळू शकणार आहे. तर सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये असणाऱ्या लँग्वेज पॉइंटवर आदित्य हा उपग्रह ठेवण्यात येईल. या ठिकाणाहून सूर्याचा अधिक स्पष्टपणे आणि विना अडथळा अभ्यास करता येणार आहे. आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून सुद्धा पाहतोय की L1 पॉइंट कसा आहे. पृथ्वीपासून जवळपास 15 लाख कोटी किलोमीटर अंतरावर हा L1 पॉइंट आहे, जिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आदित्य L1 ला 4 महिने लागणार आहेत. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated
second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, स्टेप जी आहे ती या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. आदित्य L1 हे अंतराळामध्ये झेपावलेलं आहे. 11:50 वेळ होती आणि बरोबर त्या वेळेला आता यान जे आहे ते झेपावलेलं आहे. इसमें विकास इंजन यापूर्वी अमेरिका, जर्मनी, युरोपनं सौर मोहिमा राबवलेल्या आहेत. भारताची ही पहिली मोहीम आहे. लगभग 150 सेकंड का होगा. Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है. Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड. The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है. Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है. Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. तर Plus 5 minutes. 5 मिनिटं झालेली आहेत. 5 मिनिटांमध्ये तिसरा टप्पा जो आहे तो सुरू झालेला आहे. पहिला आणि दुसरा टप्पा यशस्वी झालेला आहे. 118 किलोमीटरचा प्रवास यानानं केलेला आहे आणि तिसरा टप्पा आता सुरू झालेला आहे. इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा. वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड. जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का. PSLV हा आतापर्यंत सर्वात विश्वसनीय रॉकेट राहिलेला आहे आणि त्यामुळे PSLV C57 या रॉकेटने आदित्य L1 ला अवकाशामध्ये नेलं जात आहे. आणि तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आहे यान 2 टप्पे पार केलेले आहेत आणि तिसरा टप्पा आता सध्या सुरू आहे. L1 पॉइंट पर्यंत पोहोचण्यासाठी 15 लाख किलोमीटरचं हे अंतर आहे आणि जवळपास 125 दिवस यासाठी लागणार आहे. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा. Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. प्रक्षेपण झालेले आणि सुमारे आता 4 महिने उपग्रह अंतराळामध्ये प्रवास करणार आहे आणि पृथ्वीपासून सूर्य हा 15 लाख किलोमीटर दूर आहे आणि हे अंतर चंद्राच्या तुलनेमध्ये 4 पटींनी अधिक आहे. त्यामुळे आदित्य L1 ला पोहोचायला 4 महिन्यांचा कालावधी लागेल. आता सध्या यान थर्ड फेज मध्ये आहे. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the augment of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission.
The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. पृथ्वीपासून सूर्याचं अंतर हे 15 Argument लाख of कोटी perigee is the किलोमीटर आहे angle that is made by the perigee point आणि from the L1 चा जो ascending टप्पा node at आहे तो आहे equatorial 15 लाख plane. किलोमीटर पर्यंत आदित्य POP L1 exceeding पोहोचणार आहे 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. आपल्या ताऱ्याला म्हणजेच सूर्याचं स्वतःचं असं गुरुत्वाकर्षण आहे तर पृथ्वीचं स्वतःचं गुरुत्वाकर्षण आहे आणि अंतराळामध्ये जिथे या दोघांचं गुरुत्वाकर्षण एकमेकांना भिडतं किंवा पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाचा प्रभाव जिथे संपतो तिथून सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षणाचा प्रभाव हा सुरू होतो आणि या मधल्या बिंदूला लँग्रेज पॉइंट असं म्हणतात आणि तोच हा L1 पॉइंट आहे. पृथ्वी आणि सूर्य ज्यामध्ये आपला L1 पॉइंटवर आदित्य L1 उपग्रह असणार आहे तिथून सूर्याचा अभ्यास करणं सोपं जाणार आहे कारण मध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नसेल. तर ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहतो ज्या L1 पॉइंट पर्यंत आदित्य यान आपलं पोहोचणार आहे तर ते साधारणतः 109 ते 128 दिवसांमध्ये पोहोचेल. हे संपूर्ण अंतर जे 15 लाख किलोमीटरचं हे अंतर आहे जे आदित्य या ठिकाणी पार करणार आहे. आणि या ठिकाणी And if you're just joining us, welcome here to the launch pad. You're looking at a live view अभ्यास inside करणं the सोपं जाणार आहे कारण मध्ये कुठलाही अडथळा नसेल. पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यामधलं अंतर हे 15 लाख कोटी किलोमीटर आहे. पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यामध्ये असे 5 लॅरेंज बिंदू हे चिन्हांकित केले गेलेले आहेत आणि भारताचं सूर्ययान लॅरेंज पॉइंट 1 म्हणजेच L1 इथे तैनात असणार आहे. तर तिसरी फेरी झालेली आहे आणि आता चौथी फेरी जी आहे ती आता म्हणजे चौथा टप्पा जो आहे तो सुरू झालेला आहे. तिसरा टप्पा सुद्धा यशस्वी झालेला आहे आणि आता आदित्य L1 चौथ्या टप्प्यामध्ये आहे. आतापर्यंत 12 मिनिटं झालेली आहेत यान प्रक्षेपित होऊन आदित्य L1 अंतराळामध्ये प्रक्षेपित झाल्यानंतर 12 मिनिटं झालेली असून तिसरा टप्पा यानानं पार केलेला आहे. तिसरा टप्पा पूर्ण झालेला आहे आणि चौथ्या टप्प्यामध्ये आता सध्या आहे. या अवकाशामध्ये झेपावून आतापर्यंत 10 मिनिटं झालेली आहेत. भारताची ही पहिलीच सौर मोहीम आहे त्यामुळे संपूर्ण देशाचं संपूर्ण जगाचं लक्ष या मोहिमेकडे लागले आहे. चंद्रयान 3 याच्या यशस्वीतेनंतर जवळपास 10 दिवसांच्या आतच आदित्य L1 लॉन्च करण्यात आले. प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है. We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the Bacchu ground station. सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी इस्रोचं हे पहिलंच मिशन आहे आणि यासाठी आदित्य उपग्रहाला अंतराळामध्ये नेणारं PSLV रॉकेट. हम आपको कुछ जानकारी देते हैं. लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था. उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है. लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है. L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है. L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं. यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है. The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth.
These observations will generate a forewarning about disturbances in near-Earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the Sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the Sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun. आता ज्या भागात भारताचे यान जाणार आहे तो L1 पॉइंट काय असतो ते समजून घेऊयात. आपल्या सौरमंडळात सर्वात मोठा ग्रह गुरु आहे. गुरु नंतर शनी, शनी नंतर युरेनस, त्यानंतर नेपच्यून आणि यानंतर पृथ्वी. असे अनेक असंख्य ग्रह सूर्यामध्ये आरामात मावतील इतका सूर्याचा आकार आहे. थोडक्यात सौरमंडळातलं 99% वस्तुमान एकट्या सूर्याचं आहे. त्यामुळे साहजिक आकारामुळे सूर्याचं गुरुत्वाकर्षणही सर्वाधिक आहे. पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण हे साधारण जमिनीपासून 15 लाख किलोमीटर पर्यंत काम करतं. इथूनच सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षणाची सुरुवात होते. याच पॉइंटला L1 म्हटलं जातं. भारताचं आदित्ययान याच L1 कक्षेत फिरून सूर्याचा अभ्यास करेल. ही जागा अशी आहे जिथे पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण आणि सूर्याचं गुरुत्वाकर्षण समसमान असतं. म्हणून यानाला ना पृथ्वी स्वतःकडे खेचून घेणार नाही सूर्य. यामुळे भौतिकशास्त्रात ज्याला सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हटलं जातं त्या सिद्धांतानुसार आदित्ययान सूर्याभोवती फिरत राहणार. आदित्ययान प्रवास कसा करेल त्यावरही एक नजर टाकूया. चंद्रयानाप्रमाणे आदित्ययान पृथ्वीभोवती 4 प्रदक्षिणा घालून पृथ्वीपासून लांब जाईल आणि चौथ्या फेरीला इंजिन सुरू करून तो वह वहीं बनी रहती है क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर 2 बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है. ऐसे 5 लैग्रांजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच. इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है. आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है. अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा. इस लैग्रांजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं. जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रांजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा. दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी. वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा. लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी. वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है. अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है. अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा. Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors.
First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer, or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope, SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer, or MAG, developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है, जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HEL1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं
और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नितभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India has made history with the Chandrayaan 3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hats. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Shinde, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya L1 launch. To start with the Principal Scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya L1 mission so important, and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. I mean, first of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India, and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wave bands which are very important for the Earth ionospheric connections, like near ultraviolet band,
and the high energy particles, which is high energy radiations, as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission, which will allow us to understand the sun, its dynamics, as well as the inner heliosphere, which is an important element for the current day technology, as well as the space weather aspects of it. Thank you so much for your remarks, sir. So now we'll move on to Dr. Anil Bharadwaj. So the sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya L1 helps us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they come to the earth. We have instruments which look at not only in the sun direction, but also in other directions, for example, perpendicular to ecliptic or in the earth directions. The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth, and L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we'll move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun in the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of, it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what is a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7 through using this mission. And this instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now, why you want to have the eclipse all the time? Because you want to see the corona. Why corona? Because when sun burps, when sun is angry, the corona is what it takes the matter away. Now, what is unique about this instrument? This is going to see the corona as close as possible